Hello students and welcome back. In today's video we are going to discuss about light energy. So light is basically a form of energy just like we have discussed about the other forms, that is heat and sound, right? They were also a form of energy. Light travels in straight lines called rays. लाइट जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है, जिनको हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इफ यू हैव अ बल्ब इन योर रूम, यू टर्न इट ऑन, राइट? उसको आप ऑन करते हैं और आप देखते हैं कि विद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, लाइक वेरी फास्टली, द होल रूम इज लिट अप। जो सारा जो रूम है आपका वो जल्दी से रोशन हो जाता है, ठीक है? दैट इज बिकॉज light actually travel faster. Light travels very fast. And if we compare it with other forms of energy, then light travels faster than sound. इस चीज़ की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप रेनी वेदर अगर आपका हो या थंडर स्टॉर्म आ रहा हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको जब बादल जो हैं दे कोलाइड विद ईच अदर, यू सी द लाइटनिंग फर्स्ट, ठीक है? आप लाइटनिंग पहले देखते हैं एंड आफ्टर दैट लाइटनिंग यू हेयर द साउंड ऑफ अ थंडर, right? It's because light travels faster than the sound. All right. So that was a very good example for you to understand how light can be traveling more faster than any other thing. So what happens if the light is actually blocked by an object? When light is blocked by an object, a shadow is formed. क्या होता है? Shadow form होता है. For example, अगर sun की example लें हम, तो sun is actually a major source of light energy in the world, right? Or it actually gives the light in the form of rays, and whenever there is something that is blocking that light, it forms a shadow of it, ठीक है? ये उसका shadow form कर देता है because the light cannot pass through that particular object, and that is how the shadow is actually formed. आप धूप में अगर बाहर जाते हैं कभी तो you can see your own shadow as well. That is the example of how the light is being blocked if you are in front of it. All right. Let's move on to the next slide and learn about three types of objects. All right. So, on the basis of light energy, we have classified the objects into three types. Okay. And those three types are ट्रांसपेरेंट, ठीक है? ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? इट अलाउज ऑल और मोस्ट लाइट टू ट्रेवल थ्रू। या तो सारी लाइट ट्रेवल कर सकती है या ज्यादातर लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट में से ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं फिश पॉन्ड, या फिर आप ग्लास का एग्जांपल ले सकते हो, राइट? सो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? इट्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. Then another type of object is called translucent. Translucent object क्या होता है कि it allows some light to pass through it. उसमें से कुछ light pass through कर सकती है, ठीक है? और उसकी एग्जांपल है वो ग्लास जो कि that are actually blurred out, या उसके ऊपर एक और कोटिंग हुई होती है जिसकी वजह से you cannot see through that glass, but it shows that there is another person, yeah, there is another object behind it, okay? So that means it's translucent and some of the light do pass through it, okay? And there is another type of
object that we call opaque. And opaque object में क्या होता है, it blocks all the light passing through it. ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें सारी लाइट जो भी पास थ्रू हो रही होती है that gets blocked. और उसकी एग्जांपल अगर हम लें तो that is wood. Alright, so wood is a very a good example because light cannot pass through this. और क्या होगा कि a shadow will be formed. I hope you guys understand what are the three types of objects in terms of light energy. We're going to discuss some other properties of light energy in the upcoming videos.